Okay, Dia, what is the answer? A is -2, -2, B is 11, B is 11, and C is 1. C is 1. Okay. Now, please don't type done in chat box. Those who have different answer, just type yes. Only those students who have different answer. Okay. Arjun, what's your answer? Ma'am, A is equals to -2, B is equals to 10, and C is equals to 1. Khushi, Yes, ma'am. what's your output? Ma'am, this one, -2, 10, 1. Okay. Apart from these two, do you any other student getting a different answer? Don't type no, type yes if you are getting different answer other than these two options. Okay. Now let's see why which option we should get. So first let's start with this first option. This is plus plus a. This is the pre-increment operator. That means first the value, this is pre-increment operator. Right now it's -3, 10. So pre-increment means first the value will be decreased by, first the value will be increased by 1 and then it will be used in the evaluation. So it will become -2. Now -2 evaluates to, it is considered as true, and true is represented as 1. So this is 1. In logic, due to short circuiting of logical or operator, if the first operand evaluates to true, we don't move to second operand. So I will not evaluate this operand. Okay, so this value will remain as it is, and this 1 will be assigned, 1 is true, that true will be assigned to C. So C, the value of C is also 1. So the correct option is this one. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Now, yeah. ma'am, please explain this example again. Okay, first you tell me what you have not understood. Ma'am, How? value of B from Y it is 10. Acha, what is the short circuiting of logical operators? Ma'am, when first value is true, then we then go to next value. First नेक्स्ट value is ऑपरेंड, assigned. हाँ, तो हमारा Ma'am, ये क्या हुआ, इसका फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, ये yes, ma'am. this is, this evaluates to true, this Yes, is ma'am. -2, any non-zero value is considered as true, so Yes, this is ma'am. true, true is represented as 1. Yes, ma'am. तो जब ये ट्रू हो गया मेरा, तो मैं इधर जाऊंगी नहीं सेकेंड ऑपरेंड की तरफ, तो आई विल नॉट इवेल्युएट दिस, सो इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बी विल रिमेन एज इट इज. ठीक है, तो वैल्यू बी की क्या है, 10 थी और 10 ही रहेगी, क्योंकि मैं इसको इवेल्युएट ही नहीं करूंगी, आई विल नॉट मूव टुवर्ड्स ऑपरेंड 2. मैम, हम फाइनल वैल्यू में ये B प्लस प्लस इवेल्युएट कब करते हैं? हम बी प्लस प्लस इवेल्युएट तब करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर अगर होता है, अगर यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, सपोज इस तरह का कुछ होता, इस केस में दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में दिस इज अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर, इन दिस आई विल इवेल्युएट ऑपरेंड 1 एज वेल एंड ऑपरेंड 2 एज वेल. सो इस केस में इसकी वैल्यू भी +1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी +1 हो जाएगी. Okay, इट इज ma'am. इंक्रीमेंट, तो ये पहले इंक्रीज होके देन आई विल यूज इट इन द, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी,
Ma'am, 8. 8. Minus 2 plus 10. 10. And what value of A will be minus 2 and value of B will be 11. 11. Clear? Yes, ma'am. Okay, good. So now we move towards conditional operator. This is ternary operator. If you remember, in Python, we have discussed conditional statements. Conditional statements means if the condition evaluates to true, okay, some statements will be evaluated, else other block of statements will be evaluated. Similarly, we have this conditional operator for checking condition and acting on the basis of the output of that condition. So the basic syntax of conditional operator is expression 1 now this expression 1 is my condition expression. If this conditional expression evaluates to true, expression 2 will be evaluated. If it is false, expression 3 will be evaluated. Okay. Now, evaluates to true means any non-zero value, and false means 0. So suppose I have created a char type of variable now I will check if what is the meaning of this statement. This is my condition. Okay. So it will check if marks is greater than 33. Condition is true. So this expression will be evaluated and the value will be assigned to result. So if I'll print the value of result, it will be P. Is this clear? Yes, ma'am. So can you write a so if I want to find smaller of two numbers, so what will I write? Suppose I have two numbers. Now what should I write? Anyone can help me? If what should I write to assign smaller number to this variable smaller? Then A greater than B, then B, and then A. Then B, and then A. Else A.
ठीक है. So can you write using these conditional expression? Can you solve this maximum of three numbers in which we have used nested if else? I am writing this Python code. You have to convert this Python code into, you have to write this code using conditional expression. Largest है ये. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in the above example, int smaller is equals to a greater than b वाले में, मैम int smaller लिखना होगा मैं, मैम नीचे ये black से लिखा है. ये. Yes, ma'am. Because I have to create variables in C, right? I have to define their type and value. मैम अगर अभी तो स्मॉलर जो वेरिएबल हमारा बना है, कहाँ है? स्मॉलर वेरिएबल कहीं बना ही नहीं है, यहाँ पे ही बना है ये. मैम यही वाला अभी ये वेरिएबल बन गया ना मैम. हाँ. तो मैम अभी इसकी वैल्यू तो फिर b या a में से एक आएगी ना, तो वो इंट वैल्यू तो नहीं हुई a या b. हाँ, so this is the case of initialization or assignment. So, मैम मैं समझ नहीं पाया. मैम मैं कह रहा हूँ कि हमें इंट हमें सी में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम वेरिएबल में क्या चाहते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग है जो भी है. इसमें जो ये स्मॉलर अभी वेरिएबल बन गया है, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो a या b में से एक आएगी. तो मैम हमने इसके आगे इंट लिख दिया है, तो फिर वो इंट लिख दिया तो वो a और b को कैसे लेगा? a और b तो फिर वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू होगी ना. इंट वैल्यू यहाँ पे क्या डिफाइन किया है? इन a और b क्या है यहाँ पे? अच्छा, वो नंबर ही प्रिंट करेगा. अच्छा ठीक है मैम, ठीक है. Ma'am, Yes. can you please explain this ternary operator again? My connection was lost. Ternary operator is like the conditional statements in Python if else. So this is your basic syntax: expression 1, expression 2, expression 3. Now this expression 1 is your conditional expression. So if this expression evaluates to true, expression 2 will be evaluated and its value will be assigned to expression 1. Else expression 3 will be evaluated and its value will be assigned to expression 1. Means whatever we have here. Okay, ma'am. So this was my this is the example which we have taken. If marks is greater than 33, if this condition holds true, P will be assigned to result, else F will be assigned to result. Here value of marks is 55, so P will be assigned to result. Now we are moving towards the example which we have discussed in Python, finding the largest of three numbers using nested if else. So मैम जो रिजल्ट वाला हमने लिया था ऊपर, उसमें स्ट्रिंग नहीं लिखना होगा आगे, सिर्फ रिजल्ट में वो कर जाएगा. रिजल्ट हमने क्या टाइप का लिया है ना. यस, तो मैम अगर आगे अच्छा ऊपर हमने कर दिया स्पेसिफाई. ओके मैम.
Now this example we have discussed during Python. Now we say that if we know how to build logic, we can, it is very easy to write this logic in any language. So this is the way to write it in Python. Now using conditional expression, how we can write this thing. Just do it, just try it on your own. Always remember that this is expression 1 is your condition. If this holds true, that is, if this condition holds true, this is evaluated. So this is your expression 2, and this else part is your expression 3. So please try it and don't type it in chat box. मैम सी में फिर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, ये ऐसा ही करना पड़ेगा हमको? अभी मैंने पूरा नहीं बताया ना, अभी जो जो सिखा रही हूँ वो करते रहो, उसमें भी आएगा, सी में भी आएगा ये चीजें. Okay. But C we have a separate operator which will save us, which will save many lines. ओके मैम, ये आपने ऊपर क्या लिखा, लार्जेस्ट इक्वल टू 0? हमें समझ में नहीं आ रहा. मैंने लार्जेस्ट वेरिएबल क्रिएट कर दिया पाइथन में जिसको 0 वैल्यू असाइन कर दी. अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको लार्जेस्ट वैल्यू को, इट कैन बी x, y और z. At the end I will print largest so this was the idea. ओके मैम. मैम पर आपने तो लार्जेस्ट को 0 असाइन कर दिया ना. हाँ, वो हम क्यों करा है वो जो अभी हम सी में सीखेंगे ये चीज. अभी आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दीज थिंग्स, सो एक बार के लिए जस्ट ये रिमेंबर. तो पाइथन चल रहा है ना, लेकिन पाइथन का फॉर्मेट. पाइथन को मैंने कन्वर्ट, दिस लॉजिक यू हैव टू राइट इन सी. ओके. मैम इफ एल्स कंडीशन और ये कंडीशनल ऑपरेटर में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, बोथ डू सेम थिंग. इवन इफ एल्स में भी जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था कि इट कैन बी नेस्टेड इफ एल्स, सेम थिंग कैन बी डन हेयर मेनी टाइम्स टू ये, क्योंकि इट्स वेरी प्रिसाइज, इट जस्ट टेक अ सिंगल लाइन. सो फ्यू प्रोग्रामर्स प्रिफर दिस एंड सम अदर प्रिफर nested if else because it is easy to understand, it is easy to read. Okay, but if we have only simple comparison, it's better to use conditional operators rather than conditional statements. Okay, Ishan Sharma, you type the answer in chat box. Ishan Sharma. Yes ma'am, I am typing. Okay. So it's x greater than y, then we are comparing again it with z.
If it is also greater than z, then largest is x, otherwise z. Okay, good. So the correct answer is, if we are comparing this, so this is our first condition. Okay, so I am writing if x is, I need a variable largest is equals to, if a is x is greater than y, so I will write x is greater than y. Now if this condition holds true, अगर ये true होता है तो this block will be executed. So this block, again there is a condition, if x is greater than z, so x is greater than z. If x is greater than z, largest is x, so I will write x, otherwise largest is z. I am using bracket for readability purpose. Otherwise, else if y is greater than z, so y is greater than z. If this condition is true, greatest largest number is y, else largest number is z. Is this clear? Is this clear to everyone? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in the C code, we need not to assign largest equal to 0. नहीं, क्योंकि हम largest को use नहीं कर रहे हैं. When we were talking about variables, we have discussed that we have to initialize it with certain value. We have to initialize or assign it a certain value. Otherwise, if we use it in an expression, it will give a garbage value. But यहाँ पे हम largest को use नहीं कर रहे हैं expression में. X, Y, Z, all these three values needs to be initialized with some value. These variables should be initialized. ये हम यूज नहीं कर रहे, तो जो भी आउटपुट आएगा उसी से ही इसको इनिशियलाइज कर देंगे, वही इसको असाइन हो जाएगी. ओके Okay, ma'am. So this is about conditional statement. Practice it. Whatever question you can do in if else, you can write their code in C using conditional expression, conditional operator as well. Now another operator is assignment operator. Basic syntax of assignment operator is identifier, expression. Now this identifier generally represents a variable, and this expression can be a constant, it can be a variable, or a complex expression. ठीक है? So after evaluating this expression, whatever value is obtained, that value will be assigned to variable on left hand side. In C, it's a rule of thumb that left side should always be a variable. Okay, most of the time it should be a variable. There can't be an operator, there can't be a constant value, it should be a variable. Now, different from Python, in case suppose I have created a variable a and I have assigned 1.33 to this variable. In this particular case, this expression will be converted to the integer type. So this fractional part will be truncated
and 1 will be assigned to A. Okay. So if my expression is minus 1.33, value of A will be 1, and 1.3, even if it is 1.9, it will get minus 1. Only integer part will be retained and decimal part will be truncated if the type of variable on the left hand side is integer. The meaning is the expression will be implicitly converted into the type of the identifier. Okay. Now we have this multiple assignment in C. Like, एक्सक्यूज मी मैम yes, मैम a इक्वल टू 1.33 के सामने a क्यों आएगा आउटपुट? A नहीं, ये 1 है, ये मैंने Okay. इसमें लिखा था। ओके सॉरी मैम माइनस में भी 1 क्यों आया? नो मैम, -1 है. ठीक है मैम, ओके। So multiple assignments are also possible. Like I can write like this. And I can have many more expression. So suppose I have this kind of, इसमें क्या देखते हैं हम? How to do it? राइट टू लेफ्ट It has two operators, so we check the associativity, है ना? Associativity of assignment operator is from right to left. So first the of J will be assigned to I. Is this clear? So this kind of assignment, multiple assignments are also possible. And similar to Python, we have shorthand assignment operators here as well. Plus equals to, minus equals to. इसका मतलब क्या हुआ? If I have this, this can be written, this is equivalent to A is A plus 5. Okay. And here you have to remember that if you, instead of assignment operator, if instead of equality operator, if you use by mistake assignment operator, there will be no error. Python में error था, but see, rules are same everywhere. So if by mistake you have used assignment operator in case of equality operator, you will not get the desired output. Now, last one is your comma operator. Comma operator, it Excuse has me, ma'am. precedence. Yeah. मैम एक लैब में एक जो क्वेश्चन, मतलब ये जो ऊपर हमने शॉर्ट हैंड वाला यूज किया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो हमने जो लैब अभी लास्ट लैब हुई थी, उसमें था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक सरचार्ज लगाना है 20% का। तो वो भी शॉर्ट हैंड से हो सकता है क्या? I need to check that question again. Okay, so I will. वो भी ऐसा होता है कि अगर हम वही वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं कुछ, या उसी वेरिएबल को मॉडिफाई करके असाइन कर रहे हैं, so that everything can be done using shorthand operator. Okay. Suppose I have a value of sum as 5 abhi initially. Now I want to add the value of in this sum. ठीक है, सम में मुझे एक ही वैल्यू ऐड करनी है. The one is
sum equals to sum plus a. There is plus equals to a. ठीक है, जहां पे भी हम उसी वेरिएबल में मॉडिफाई करके उसी को असाइन करते हैं न्यू वैल्यू, देयर वी कैन यूज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स. Now the comma operator, it has least precedence among all operators. इससे ऊपर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. Now first and foremost, the comma operator can be used as separator. While initializing and creating variables. Okay. That means you are defining variable and assigning some initial value to the variable. Okay. Or during a variable definition, this comma operator acts as a separator. What do we mean by this? Suppose I write int a comma b comma c. So during variable definition, this comma operator acts as separator. So it will associate type to every variable. So this is equivalent to int a, int b, int c. Okay. If I write it like this, int a equals to 3, b is 4, and c is 8. Here, this int operator, this comma operator will associate this type with every new variable. So this is equivalent to int a is 3, b is 4, and c is 8. Clear? Now this comma operator also acts as an operator. And suppose I print value of a. Abhi I haven't discussed printf statement, but let me write it. Okay, suppose I'm printing value of a. So what will be the value of a? This comma operator returns the rightmost operand in the expression. Means it will evaluate all the expression and return the rightmost expression, or here the constant. So if I print the value of a, it will be 8. Now, why I need to add parenthesis? Because if I write it like this, तो क्या होगा? इस केस में what would be the output? Here we have two type of operators. I have comma operator, I have assignment operator. Now comma operator has least precedence, and precedence of assignment operator is more. So this 3 will be assigned to a, and this is equivalent to so if I print the value of a, it will be 3. Is this clear? ये वाली चीज क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पहला वाला समझा दो पहले. ये वाला? Yes, ma'am. I am saying that comma operator acts as an operator. Comma also acts as an operator
It means suppose I have this expression, so it evaluates expression from left to right and only returns the rightmost expression. मतलब अगर यहाँ पे कुछ 3 + 4 इस तरह का कुछ होता तो वो उन सबको इवेल्युएट करता और लास्ट में जो फाइनल वाला है राइट मोस्ट वाला उसको रिटर्न करता. दैट मीन्स दिस राइट मोस्ट विल बी असाइन्ड टू A. Okay, if I print the value of A, it will be 8. If I have this expression without parenthesis, so here this precedence of assignment operator is higher than comma operator. In this case, value 3 will be assigned to A. It is equivalent to this. Okay. मैम वो 3+4 एक्सप्लेन कर दीजिए, वो क्या? कौन सा वाला? मैम वो 3+4 मतलब ए में राइट 8 की वैल्यू आ जाएगी ना, तो मैम वो 3+4 क्या है? अगर मैं ऐसा लिखूं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सपोज इस तरह का है, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ? दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस, दिस आल्सो हैज हायर प्रेसिडेंस एडिशन एंड हियर दिस हैज हायर प्रेसिडेंस. सो फर्स्ट I will get 7 comma B. B is 4 and 11. So it will evaluate these and reject everything and returns the rightmost expression. So A will get 11. Okay. Ma'am, will we need to Value will be used and remaining will be rejected. मैम 3, B equal to 4, 9 दिखते तो फिर A की वैल्यू 4 हो जाती ना? कौन सा लिखते? मैम अगर केवल 3 दिखते B equal to 4, 9. नहीं, उस केस में अगर हम ये पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं ना, तो पहले पैरेंथेसिस होता है इवैल्यूएट. पैरेंथेसिस के अंदर ये है, ये बोल रहे हो ना? Is this what you are asking? यस मैम. और मैम B equal to 4 कर देते तो फिर मैम असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखते क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो ये तो 4 B को असाइन हो गया, तो अभी B की वैल्यू हो गई 4. ठीक है, यहाँ पे तो मगर ये B ही रहेगा, इसकी वैल्यू हो गई 4. यहाँ पे ये 7 आ गया, ये 9 आ गया. अब ये कॉमा ऑपरेटर है इनसाइड पैरेंथेसिस, सो आई विल जस्ट take the rightmost value and reject the remaining one. So 9 will be assigned to A in this particular case. मैम अगर हमने बाद में B को भी प्रिंट किया तो वो 4 प्रिंट करेगा कि वो पूरे प्रोग्राम से ही नहीं अभी? नहीं, B को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो 4 प्रिंट करेगा, क्योंकि हम इवैल्यूएट तो कर ही रहे हैं ना सारे एक्सप्रेशंस को. हम बस बाकी सबको रिजेक्ट करके सिर्फ राइट मोस्ट जो भी वैल्यू आती है दैट वी विल रिटेन. Ma'am, so what is the practical use of this comma operator? As instead of typing 3 values, we can only type the rightmost value. हाँ. So what is the practical? Practically, sometimes we need to assign multiple values. Sometimes we assign multiple values after certain evaluations. So उसको हम कॉमा सेपरेट कर सकते हैं. We will learn about these in coming classes. ठीक है, कॉमा ऑपरेटर का यूज क्या है. One is acts as a separator, and for assigning values multiple times, then also we use a comma operator. अच्छा, हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया. दिस इज क्लियर, पैरेंथेसिस वाला इवैल्यूएट हुआ. दिस इज बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर वाला इवैल्यूएट हुआ. नाउ अगेन थर्ड वन इज int a is 3, 4, 8. Now what should be the output? A equal to 3.
3 3. पक्का? 3. Yes. इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इन तीनों में डिफरेंस है कुछ कुछ. I said that during variable definition, this comma operator acts as a separator. So what it will do, it will associate this data type with every uh, identifier, we can say. So I can write it, this is equivalent to int a is 3, int 4, int 8. अब बताओ, is it okay? So value of a will be 3 if I run this particular code. Any answer? Yes or no? Why error? Can I have a variable name which begins with digit? No, ma'am. So here the variable name is beginning with 4. 4. Here 8. 8. So that's why it's an error. Clear? यहाँ पे I have created this variable separately. At the time of variable declaration or definition, this comma operator acts as a separator. ये हमने यहाँ पे देखा था. इधर कोई दिक्कत नहीं आई because we have used parenthesis. Parenthesis has higher precedence. So पहले ये वाला चीज evaluate हुई and then accordingly value was assigned to A. In this particular case, there was no parenthesis and this is a declaration statement, definition statement, and here comma operator acts as a separator. And variable names can't start with a digit, so it will produce an error. Is it clear? Yes, ma'am. मैम तो इसमें ए को भी 3 वैल्यू असाइन नहीं होगी. वो तो हो जाएगा, ये तो इंटरप्रेटर तो है नहीं, कंपाइलर है. इट पूरा कोड देखेगा, अगर कहीं पे भी एरर है तो इट विल प्रोड्यूस एरर. ओके मैम. Okay, few questions because I don't want to start a new topic. Okay, we will discuss few questions and in the next class we will begin with new topic. So I am writing 2-3 questions. We will solve it in your notebook. Don't type your answers in chat box. Okay. What will be the value of A, B, and C? A, B, C, and D. Value of D.
value of x. So these are the questions. I am not, we are not doing it right now. I want you to understand these questions properly, and we will discuss these questions in the next class. ठीक है? I have Ma'am, please show question number 2. question number 2. This is question number 2. Ma'am, show the last one. Please, I request everyone, don't try them. If you know a little bit of C, don't write them and don't try to execute them. इसको पहले खुद से करना, ठीक है? Shall we discuss one or two questions Ma'am, here? अभी time है? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. So what will be the output in this particular case? Quickly we are doing, okay? Acha, anyone with the letter name starting with letter A, alphabet A, he can answer. Ma'am, it's 1011. हाँ बताओ. 1011. 1011. 1011. Is there anyone who is getting another answer? सबका यही आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है? Ma'am, 2010. इसके अलावा? Ma'am, 0010. Any other? Ma'am, 1010. And 1110. Another? 1110. और भी कोई है? 1111. ओके, सारे कॉम्बिनेशंस हो गए हमारे पास में.
कितने हम कर सकते हैं 4 बिट में रिप्रेजेंट नंबर्स? What is the range of values we can represent using 8 bits? भूल गए? 120 minus 2 raised to power 7 n minus minus 1. तो कितने हो गए? 0 to 15. चलो, हाँ, करेक्ट आंसर मेजॉरिटी. I 1011. go with this 1011. Okay, let's check. This is plus a pre-increment operator. Okay. So value will be increased to 2. And this 2 means false or true. Any non-zero value means true. True. Yes. True. 1. So we will not go to B++. We will only assign 1 to C. So C को क्या मिल गया? 1. Now D is B minus minus and minus minus A. So this is pre-increment or post-decrement or a pre-decrement. It is a post-decrement. That means value will be used first and then it will be decreased. So first I will use this value 1 and then I will decrease it by 1. So it will be 0. Now true and minus minus a. अभी a की value कितनी है? 2. Minus minus a means 1. So 1 and 1 is 1. So I have a as 1, b 0, c 1, d 1. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The answer? Yes, So ma'am. answer is 1011. मैम को लास्ट के क्वेश्चन दिखा दो, वो कॉपी नहीं हुए थे. अच्छा जल्दी देखो. मैम हो गया. इसका क्या आएगा आउटपुट? Output should be T or F. So T आएगा या F आएगा? This is my expression. Okay. This is left to, there are two operators of same precedence. They have right to left associativity or left to right. They have left to right associativity. Assignment operator is having right to left. बाकी सबकी left to right. So this is having left to right associativity. So C is greater than B. Is this true or false? 30 is greater than 20. Is true or false? True. True is 1. So 1 is greater than 10 or not? True or false? False. False. That means F. Okay? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now this question, what would be the output? Error. Error तो नहीं है. 5.
चलेगा बोल दिया। चलो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ बिकॉज हमारे पास में टाइम नहीं है. See, this is my equality operator and this is assignment operator. When we have two type of operators in an expression, we check for the precedence. So मैंने अभी बोला था कि precedence of comma operator is least और उससे ऊपर किसकी है assignment operator की. That means precedence of equality operator is higher. So first we will evaluate this expression. Y is greater than Z. Y is equals to Z. True or false? True. 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 Is 1. So X is 1. So output is 1. Clear है सबको? मैम यहाँ पे बोल वैल्यू नहीं मिल सकती उसको ट्रू? नहीं, हमने ये बोला था ना कि हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं वो इवैल्यूएट हो रहे हैं ट्रू और फॉल्स में, एंड ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 जनरली. Any non-zero value is also considered as true, but generally it is true is represented by 1 and false is represented by 0. So this true will be represented by 1. So 1 will be assigned to X. ये एरर. क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को रिपीट करिए. x इक्वल टू 1 बाद में लिखा है पहले था? कौन सा वाला? हम ये जो बीच में है नहीं, मैंने अभी लिखा है ये मैंने अभी समझाने के लिए लिखा है. ठीक है, this expression will be evaluated first and this results me 1. So 1 will be assigned to X. So output is 1. A value of X will be 1. Now इसका क्या है? एरर. Any other answer? Error. Why error? Because it's a declaration, variable declaration statement. Here comma operator will act as a separator, so it will be equivalent to I is 1 int 2 int 3. So variable can't start with number, so it's an error. Chalo, we will do remaining questions in the next class. You try it on your own. Please don't don't write it and try to execute these programs. Try run it, मतलब solve करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है, and then try to understand. अपनी कॉपी में करके रखना and we will discuss it in the next class. Okay? मैम कल की क्लास में आप कुछ नया पढ़ाएंगे या पुरानी पढ़ाएंगी? नहीं, पुराना ही पढ़ाऊंगी. मैम कल क्लास कितने बजे? अभी I need to check. Okay, I'll send a mail by today. Okay. मैम मैं डाउट पूछ सकता हूँ? क्या बोलो? मैम इन द सेकंड क्वेश्चन, दिस इन द सेकंड क्वेश्चन, मैम ऐसे तो फिर हम तीन वैल्यू को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो पहले को ही ट्रू 1 या 0 में कन्वर्ट कर देगा, तो हम तीन वैल्यूज को कैसे कंपेयर कर पाएंगे? अगर हमको तीन वैल्यूज को वैसे कंपेयर करना है तो देन वी विल यूज एंड ऑपरेटर, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स वी विल यूज, एंड वी विल कंबाइन दोस कंडीशंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर. ओके मैम मैम आज आपने जो बताया था इंट ए में a इक्वल टू 1.33 में मैम a की वैल्यू 1 आ गई थी. तो मैम कल जो आपने एग्जांपल बताया था 22/7 में 3 आ रहा था और 22/7.0 में 3.14 समथिंग. यस मैम. तो मैम ये भी तो उसके डेटा टाइप, वेरिएबल की डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा. हाँ, वेरिएबल के डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा, मगर सपोज मेरा ये है, ठीक है, अब पहले क्या होगा, इवैल्यूएट हो जाएगा. दिस इज इंटीजर डिवीजन, सो ये विल बी 3. अगर मैं यहाँ पे फ्लोट भी ले लूंगी तो मेरा है तो क्या, वैल्यू तो पहले यही इवैल्यूएट होगी ना. दैट वैल्यू विल बी असाइन्ड टू, इवन इफ इट इज फ्लोट, इट विल हैव 3.0. Okay, this is because of integer division. First, arithmetic operators will be evaluated and that value will be assigned to this variable. तो 22 डिवाइड बाय 7.0 में भी वो वैल्यूज की 22.7.0 में अगर ये वैल्यू आ गई 3.14, यस मैम, अगर ये यहाँ पे फ्लोट है देन इट विल बी 3.14. बाय चांस अगर मैंने इसको इंटीजर ले लिया देन इट विल बी 3.
ओके मैम। Okay. मैम कल की क्लास कंपल्सरी तो नहीं है ना अटेंड करना? No. It's only for those who have joined LNMIT a little late and or those who have missed some classes. यस मैम, मुझे क्वेश्चन में पिछले लैब में डाउट था तो उसको आपको ईमेल कर दूं? मेरे को ईमेल कर दो, बट मैं कल शाम तक रिप्लाई कर पाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। मैम मुझे फर्स्ट वाले में एक डाउट है। हाँ पूछो। मैम वो उसमें आपने जब हम सी निकाल रहे थे तो आपने बी को इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया? कौन सा था? ये क्वेश्चन वाला? हाँ ये क्वेश्चन तुम बोल रहे हैं ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास एज वेल। अच्छा क्योंकि लॉजिकल में अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होता है तो हम सेकंड पे जाएंगे ही नहीं ना, लॉजिकल और के केस में। हाँ जी, तो वो शॉर्ट सर्किट ठीक है, पर फिर भी वो इंक्रीमेंट ही नहीं होगा क्या? नहीं हम मतलब जाएंगे नहीं ना, आपको पता हम सेकंड ऑपरेंड की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एट ऑल। ओके हाँ समझा, थैंक यू। ओके